22 की, तो भाई बड़े हो जाओगे, थोड़ा वेट करो, 4 साल 5 साल। सबसे इजी होता है होना है वो 1945 ईयर्स का हो। गाइस 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 गाइस, एक बात तो क्या करूं यार, बताओ यार, कुछ बोलो यार, आप लोग भी बोलो यार प्लीज। फॉर मैन, देखो मैं ये सारा कुछ आपको कैश फ्लो वगैरह सारा कुछ बताऊंगा, बैलेंस शीट जब बताऊंगा ना आपको तब बताऊंगा। जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद ना मैं जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद ना मैं जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद ना मैं So we are checking for the stocks जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा हो, FII ने 3.5% हो होल्डिंग। हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज देख रहे हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आई हैव कंसिडर्ड लाइक शुड बी लेस देन 10,000 करोड़। ये सब करोड़ में है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 30%, तो कुछ पैसा बने और हर ईयर सेल्स ग्रोथ उसका 30% से ज़्यादा हो। तो ये क्वेरी है टू फाइंड सम ऑफ द वैल्यूड स्टॉक्स। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा वैल्यूड स्टॉक्स हैं। So if I execute this, run this query, so I'm getting this companies जिसमें है ओसवाल पंप, क्रिजैक, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस अभी नया एक कंपनी था जिसका अभी आईपीओ कुछ दिन पहले निकला हुआ था। सो आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम ये थोड़ा सोल्ड जोन में है। और अभी एबीएन मेटल और शिवरात्रि फूड्स, ये दो एक कंपनी है। तो ये मेरे को कल लाइव में जब मैं आया था तो उन्होंने पूछा था कि ऐसी कोई कंपनीज जो रिसेंटली में अच्छी हों और जिनकी क्वांटिटी हम खरीद सकें इन्हें, लाइक हायर लॉट्स। तो ये वो कंपनीज हैं जो उसमें से ओसवाल पंप। तो यदि ओसवाल पंप अपन देखें, सो ओसवाल पंप इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ये योजना चलती है, कुसुम योजना। सो अंडर द कुसुम योजना यदि गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के टेंडर और प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है। तो सेम लाइक ओसवाल पंप से कंपेयर करें तो अपने को मिलेगा, आई थिंक कॉम्पिटिटर्स आर शक्ति पंप। तो शक्ति पंप का भी सेम है, उनमें भी गवर्नमेंट का टेंडर फ्लोट होता है तभी है। तो पी वैल्यूएशन देखें अपन बाकी कंपनी के कंपैरिजन में, क्यूमिंस इंडिया, किर्लोस्कर, केएसबी, किर्लोस्कर ब्रदर, शक्ति पंप्स एंड ओसवाल। सो इट्स का मार्केट कैप है नियर अबाउट 5930। okay, but if you'll see the sales growth is increasing quarter by quarter, and the profit is also increasing. But the problem here is the OPM. If you'll see the OPM earlier, it was in September 2024, it was near about 31%. Now it has been reduced to 24%. So operating profit margin stands for OPM. Okay, so उसका देखेंगे तो ये गिरते ही जा रहा है। सो अर्लियर इट वाज 20%, फिर 27 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 31, 27, देन 24। तो एक ये चीज़ है, यदि प्रॉफिट मार्जिन वो अपना सही करेंगे, सो आई थिंक विद द नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हुआ ही है हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। सो 310 करोड़ रुपीज़ था इन द मंथ ऑफ सितंबर, और सितंबर 2025 में 540 हो गया। सो इट इज़ इंक्रीजिंग, लाइक इट्स इंक्रीज बाय नियर अबाउट 80%, मोर देन 80% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो अच्छा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो उसको भी 80% होना चाहिए था, नियर अबाउट 180 करोड़ आना चाहिए था। लेकिन जैसे देख रहे हैं कि पहले प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट पिछले सितंबर में 33% होता था, अभी 24% है, तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। बट नेट प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड, इट इज़ इंक्रीज, बट दिस कंपनी रिलाइज अ लॉट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एज आई टोल्ड यू। सो ये एक चीज़ है। तो गवर्नमेंट का कुसुम योजना में यदि
इसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी. बट हियर द गुड थिंग व्हाट आई सॉ लाइक the DII, domestic investors have increased their stake. So earlier it was 9.12, it now presently it is 9.78. तो ये है. और पब्लिक होल्डिंग इसकी कम हुई है जो अच्छी है. जब DII और FIIs में इन्वेस्ट करेंगे तो पब्लिक होल्डिंग कम होती है उसकी. And the number of stakeholder is also near about 90,755. तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जो इस कंपनी के साथ है. इट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट जो चीज़ अच्छी है कि प्रमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड. FIs were buying, but yeah, in the previous quarter they have sold a bit, but because of maybe they have not shown, maybe the one of the reason is the OPM, like the operating profit margin has been reduced. तो वो हुआ है. और फिर लेकिन DIs तो बढ़ाई है इसमें. So this is one of the company which has have a capability. Okay, another thing what we see like FIF holding, if we increase it, like we have kept it as 3.5. So if we increase, then it will make some changes, like it will show some change there. दूसरा है ग्लॉटिस. दिस इज़ द अनदर कंपनी. बहुत इनिशियल स्टेज पे है कंपनी का. कुछ ज़्यादा डाटा भी नहीं है कहीं पे. कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में नहीं है. But yeah, what we can see is it's a logistic company that offer like comprehensive transportation services through ocean, air and road logistic. और यदि देखा जाए तो जो रिपोर्ट है, सो बेस्ड ऑन दैट लाइक आवर लॉजिस्टिक और द एक्सपोर्ट सर्विसेज विल इंक्रीज बाय 3 times. So if you'll see the market cap is near about for this company is 552. Number of equity shares is 9.24 crores. It's very less if you'll see. Sales growth is something what we need to see. यदि आप देखोगे sales growth तो 89.3% है, which is very good. Okay, and another thing is promoter holding. So we newly listed company है, so that's why you are seeing like 25.8% change into the promoter holding. But यदि देखा जाए तो promoter holding 74.2 is very good. Okay, and intrinsic value नहीं है अभी, maybe because it's not having a record of 4 quarters, so that's why we are not seeing any intrinsic value here. बट अब देखोगे तो फ्रॉम 85 आई थिंक द IPO केम नियर अबाउट अ प्राइस ऑफ 120 और समथिंग. तो 120 126 से वो गिरते गिरते अपनी 50% वैल्यू पे आ गया है. एंड द वॉल्यूम इज़ वेरी लेस. ओके, प्रॉज एंड कॉन्स कुछ भी नहीं है अभी. बट इफ़ यू सी द कंपैरिजन विद अदर कंपनीज लाइक VRL लॉजिस्टिक और TVS सप्लाई, द P is very attractive for this company. अभी 11.55 P चल रहा है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वेरी लेस. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी. ओके, सो इट्स अ बिगर रिस्क. तो रिस्क एंड रिवार्ड वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें कि बहुत नीश और बहुत इनिशियल स्टेज पे है अभी ये कंपनी. बट या द ROC what you see is very good. Okay, so ROC is near about 18.96 and the sales is in 941 point this one. And we don't have 5-year data because this company was established in the year of 2014. तो ये एक चीज़ है इसमें. यदि सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इसका इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 149, देन 287, देन 307. जून मंथ इनका लेस होता है. वी डोंट नो प्रेजेंटली, इतना डाटा नहीं है कि बता सके क्यों जून मंथ में इतना कम सेल्स होता है. बट इन सितंबर ऑल्सो दे हैव शोन अ डिक्लाइन. सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन सी. 287 से लेके 215 आ गया है इसका. ऑपरेटिंग प्रॉफिट OPM परसेंट देखें तो 10 10 5 देन 10 देन 8. ये भी कम हुआ है विच इज़ नॉट गुड. मे बी बिकॉज ऑफ दैट इतना प्रेशर दिख रहा है शेयर और इट इज़ गोइंग इन टू द डाउन ट्रेंड. बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज लाइक नियर अबाउट 14 28 15 16 एंड 17. in it's not a huge difference. Net profit also it's very in initial stage,
But if the good thing is, if you'll see the sales from 23, 24 and 25, it has been a drastic change. But we have to see for some more quarters to see like how the company is performing. As I mentioned, there is a very limited data for this company, but net profit भी ठीक है इसका. The TTM is very good, it's 89. And the another thing which I found it good in this company is like promoter, if you can see, is 74.23%, and FI holds a good quantity of the share in this company. It's 4.88%, which is very good with compared to the like capitalization what the company have, and the public holding is less and number of shareholder is also this much. So this is one of the company from the query what we found. दूसरा देखें तो अपन regarding the Crizac, it's a educational platform that offers international. It's a newly listed company. This is also recently listed company. Mostly I don't invest in education company because a lot of things will be depending on this. But yeah, like and the valuation is 274 and the intrinsic value is 520. Means the actual value what it shows is 520. Sales growth, it's in 3 years, like it's 60.3%, which is good. We can consider as a good sales growth. The company is almost debt free, has a good return on equity track record, 3 year ROE as you can see as 49.2%. So that is also good. और उसके peer से भी compare करेंगे तो it is on good valuation like what we are getting it presently. But yeah, and do like investigations or your thorough go through that company before investing. And just I am doing it for my educational purpose. I'm not recommending this to anyone that you go and buy this share, and I am not entitled to do that. Okay, so better you go and search by your own, do your research, and then you figure out whether you find it attractive or not. Another thing, based on our query, why this company has been listed out here, because the we selected in our query as FII should be having holding more than 3.5%. So if you see here, it is more than 3.5. Okay, so FII have increased their holding. Promoter का भी 79.94 है, which is very good. DI have reduced their stake. So this is something concerning, like why DI have reduced their stake, because they have a big team. They do a thorough analysis before buying any of the company. So if they are doing it, something means there should be something, or they or another reason that in another stocks they are seeing it more potential than this. That's my perspective. Okay, so you can go through them and see. And the another is public, the public holding, because the DI have sold out and the FI purchase less than what DI sold, so the public is having more share. So maybe because of that, it is seeing some pressure there, and because of that, the stock is keep on going down from the top what it made near about 366 or 380. The another company what we can see is Shiva Shrit Foods. Let's see what this is. I never came across this. There are like thousands of companies. So market cap इसका 238 crore है. Intrinsic value, oh my god, intrinsic value if you see, it's a 269. Promoter holding सही है. Sales growth more than 30% as per our query. Okay, and sales growth 51, 54, 61. Okay, let's try to do something in this, and let's increase the market capitalization from 10,000. Let's make it 1 CR, 1 lakh CR. Okay, and return on equity is okay. Sales growth चाहिए अपने को कि 30%, 30% से ज़्यादा होना चाहिए. प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा होना चाहिए. FI होल्डिंग
3.5 से ज़्यादा होना चाहिए. And if we execute, let's see. So we have the same company as Oswald, Crizac, Glottis, and let's make it, yeah, ABN Metals, Aptus Pharma. Okay, let's go through Aptus Pharma. Just give me 2 minutes. I'll be back. So Aptus Pharma, if you see here, मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनी है, 111 करोड़ की है. बट व्हाट आर द गुड थिंग्स हियर? सेल्स ग्रोथ इज़ वेरी गुड, 37.9% का सेल्स ग्रोथ है. प्रोमोटर होल्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, 72.9 की है. इंट्रेंसिक वैल्यू, सो बेस्ड ऑन इंट्रेंसिक वैल्यू दिखा रहा है 183, और अभी उसका शेयर चल रहा है 162. सो इट्स नियर अबाउट the intrinsic value also. It have moved a bit, a lot, what I can see. Okay, so still there is a potential because it is showing the continuous growth. Okay, so if you'll see the sales have near about increased a lot, 13, 17, 24, but it's a very small company, very small company. So just go through it before you invest. अपने क्वेरी में इसलिए आया है क्योंकि ये प्रोमोटर होल्डिंग अपना क्राइटेरिया था कि प्रोमोटर होल्डिंग नियर अबाउट 70% से ज़्यादा होना चाहिए, और FII का होल्डिंग नियर अबाउट 3.5% से ज़्यादा होना चाहिए. सो दैट्स वाई this company came into our query, because the promoter is having near about 72.89%, FII is having near about 10.03, DII is 2.8. It's not bad. I think it's a newly listed company, so we don't have any historic data. I think we should give some time to see how this company is performing, and later on you can decide whether you should go for it or not. But yeah, on seeing with the initial things, we don't have lot of historical data, तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते. But yeah, अभी तो देख के लग रहा है कि based on the query, the company is doing good. कुछ क्वार्टर्स और देखिए कि कैसा कर रही है. Based on that you can figure out this. मोस्टली ऑल सारे फार्मा कंपनीज अभी तो अच्छे ही कर रहे हैं जिस हिसाब से मिल रहा है. एंड देन वी सॉ Oswald Pumps, we saw Crizac, Glottis, and ABN Metals, Aptus Pharma. There are some new company came on when we increased the market capitalization. पहले अपना market capitalization अपने क्वेरी में कितना डाला था? 10,000. अभी 1 लाख करोड़ डाला है. और प्रमोटर होल्डिंग अपने क्राइटेरिया में डाला है कि मोर देन 70% होना चाहिए. FII होल्डिंग शुड बी मोर देन 3.5%, एंड कैपिटलाइजेशन शुड बी नियर अबाउट 1 lakh crores, and return on equity should be more than 30, जो मिनिमम अपने को चाहिए to beat other parameters like other FD and other things what we are seeing in market today on nowadays, like giving more interest. Sales growth 30%. So company, so we got MB photo volume, not sure what this company does. Let's see for just Jan Resources. Jan Resources also looks like a new company which got recently listed. Recycling में है, subsidiaries specialize in recycling non-ferrous metal scrap and produce lead copper. Okay. The company also trade in ferrous metal commodities. Market cap, it's okay. It's near about 12,569 crores. FII होल्डिंग भी सही है 6.42. प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है 17.3. What this is, sales growth 3 years is 196%. It's impressive. And sales growth is every year is 47.8. Let's go through that financial report. And who are the peers competing with this company? Vedanta, Pondy Oxides, Innomet Advanced, and Bolan Industries.
सेल्स यदि देखें तो लास्ट ईयर था 1436 करोड़, नाउ विच हैज जंप टू 2055 crore, which is good. Operating profit is op oh, it's very good. 71 से 156 हो गया है, which is good to see how they are going to do in future. But profit before tax, it is also good. OPM, operating profit margin has been like continuously they are increasing, which is very 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 good thing. पहले 5%, 5% होता था, अब 6, उसके बाद मार्च से लेके जून तक 6% हुआ, फिर इट इज़ नियर अबाउट 8%. इट्स गुड. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब ओपीएम इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली ये भी, इसका भी इफेक्ट दिखेगा, एंड द सेल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड. So just calculate the ratio on which it is increased. So just to see other incomes have reduced. I'm not sure in other income what it is. Other income normal. I'm not sure what is normal. We have to go through the complete balance sheet to see what is normal here. And net profit has also been increased from 58 till 99. It's good. Sales growth is awesome. It's very good. 236 से 1880, फिर 416, फिर से इतना sales growth. That's why we were seeing it so high at the starting. When we saw there, it is near about 46% or something, which is very good. Operating profit margin बहुत अच्छा है. Profit before tax भी अच्छा है. Net profit भी, it is going good. It's a good company then, I think. Do your research before you buy. I don't provide any buy and sell recommendations, so just do your research properly before buying it. एफआई भी बने हुए हैं, डीआई भी बने हुए हैं, पब्लिक भी कांस्टेंट है. कंपनी को थोड़ा और लाइक, आई थिंक पीपल आर ट्राइंग टू व्यू for some more time, and then okay guys, I'll take 5 minutes break and then we'll meet again. Do let me know if you have any other questions so we can go through it. Thank you.